नीलकुन्तले वनरुहाननम् बिभ्रावृतम् धनरजस्वलम् दर्शयन्मुः मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि श्रीनन्दनन्दना यशोदा जीवना हे दामोदर ये श्रीमा दुआ. O beloved hero, as the day draws to an end, you return from the forest, lotus face partly covered by your bluish black locks of curling hair and veiled in a very thin layer of dust rising from the host of cow's hoof. At that time, by repeatedly showing us your beautiful lotus face, so executively ornamented, you arouse amorous desire within our heart. तो यहाँ पे गोपियां अब एक ऐसे समय की बात कर रही है दिन की पहर के, जिसको हम सब लोग क्या बोलते हैं, गोधुली बेला. गोधुली बेला इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम. व्हाई इट इज सो ऑस्पिशियस? बिकॉज इस समय जो सारे भगवान मतलब सारी गायें जो है भगवान कृष्ण के साथ गोचारण करती हुई वापस आ रही होती हैं, तो उनके जो रूफ है उसकी जो हवा जो है जो उसके पार्टिकल्स उड़ते हैं, उससे सारा एनवायरनमेंट जो है वो गोधुली से भर जाता है. और गो भगवान के चरण के जो चरण की जो धूल है, रज है, और गौ माता के चरण की जो रज है, वो मिलकर पूरा एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ही सुंदर और भावुक हो जाता है. वो इतना सुंदर एनवायरनमेंट हो जाता है कि कहते हैं उस समय करे हुए कोई भी कार्य उसके बहुत सारे परसेंट के मतलब बहुत परसेंटेज जिसे कहते हैं उसके बेनिफिट्स मिलते हैं. इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि मैरिज जो करी जाए वो कब करी जाए, गोधुली बेला में. क्योंकि गोधुली बेला में करी हुई जो मैरिज होती है बहुत ऑस्पिशियस कंसीडर की जाती है. तो ये एक सदी का ऐसा समय होता है जो बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस होता है, बहुत ही ज्यादा शुभ समय माना जाता है. और जब भगवान कृष्ण शुरू करते हैं अपनी गोचारण लीला, तो उसमें जब वापस आ रहे होते हैं तो नंद भवन में एक स्पेशल आरती गाई जाती है. नंद भवन नंद गांव के अंदर वो यह आरती इस तरीके से है. यशोदा मैया खोल केवड़िया, लाला आयो गाय चराए, आयो गाय चराए लाला, आयो गाय चराए. ओ यशोदा मैया, जल्दी से केवड़िया मतलब दरवाजा, किवाड़, जल्दी से किवाड़ खोल या खिड़की खोल. हाँ, लाला आ रहा है, क्या करते हुए. एक मिनट, हरे कृष्णा. हाँ, यशोदा मैया खोल केवड़िया, लाला आयो गाय चराए, आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, यशोदा मैया खोल केवड़िया.
लाला आयो गाय चराए, गौ गोप गवालन गौ संग, वंशी मधुर बजाए। सुन गोपी जन मन हर्षित भई, चरी अटारी जाए। मतलब ऐसा समय होता है ये दिन का, जिसमें सारी की सारी गोपियां अपने सारे के सारे काम खत्म कर कर अपनी छत पर सास, बहू, बेटी, दुरानी, जेठानी, नंद, कोई कंसिडरेशन नहीं है। सब के सब को काले नाग ने डसा हुआ है। काले नाग ने मतलब कृष्ण को काले नाग से कंपेयर करते हैं। अभी आगे चल के तुम पढ़ोगे इसके बारे में। सारे के सारे बस अपनी छत पे चढ़ के बैठ जाते हैं, ये कन्हैया आएगा, कन्हैया के दर्शन होंगे। एक बार ऐसे में कोई डिवोटी ने बोला, बड़े सीनियर डिवोटी थे, कहते आज आपने रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में लेक्चर सुना भागवतम में? बोला नहीं प्रभु जी, सुन नहीं पाया, सॉरी। क्या था उसमें? उसमें बता रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे मन की इच्छा है कि मैं कृष्ण को गोचारण लीला करते हुए वापस आते हुए देखूं। देख रहे हो, कृष्ण बलराम को देखना चाहता है। ये देख रहे हो, मतलब क्या नाम है, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी। और तुम कहते हो कि सिर्फ गोपी भाव गोपी भाव गोपी भाव। बोला आई थिंक आपको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भगवान को गोचारण लीला करने हुए आते हुए देखने का जो भाव है, वो गोपियों का है। क्योंकि ग्वाल बाल तो भगवान कृष्ण के संग में वापस आ रहे होते हैं ना। देन ही हैड नथिंग टू से। he did not say anything, then he smiled. यशोदा मैया करे आरती, फूली नाए समाए, हंस हंस लेत बलैया, मैया बार बार बली जाए। और उस यशोदा मैया इतनी खुश होती हैं कि कन्हैया आएगा वापस, चलो आरती करती हूँ। उसकी आरती रोज आरती उतारती है। आरती करने के बाद जितनी भी बलैया होती हैं, भगवान के भगवान की बलैयाओं के लिए ही भगवान को वंस इन अ वाइल या फिर हेयर एंड देयर उनको पंचगव्य से स्नान कराया जाता है। भगवान के सारे शरीर पर ब्रज रज की बजाय, मतलब खैर ब्रज रज और गाय के गोबर को मिला के उसकी रज से भगवान के शरीर पे 12 तिलक धारण किए जाते हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हाँ। अरे कृष्ण भगवान खुद भगवान है। इसी बलाओं को दूर करने के लिए ही जो यशोदा मैया ऐसे होता है ना, जैसे औरतें करती हैं, दोनों हाथों को कान के पीछे लेके गई और अपने कान के पास ले जाके कट करके उन्होंने अपनी उंगलियों को बजा दिया कि कट, अब मेरे सारे के सारे लाला की बुलाए खत्म। और इन्हीं बुलाओं को दूर करने के लिए ही यशोदा मैया कृष्ण के सर पर मोर का पंख लगाती है, क्योंकि मोर का पंख जो है वो आंख को रिप्रेजेंट करता है। तो ईवल आई मतलब कोई भी गंदी आंख देखेगी तो डर के भाग जाएगी। ठीक है। तो हंस हंस के बलैया लेती है और बार बार बलिहारी बलिहारी करती है। खिड़क कोर कर गैया कर दीनी, बछड़ा रयो चुखाए, कारी काजर गोरी धूमर कोरयो दूध दुहाए। अब खिड़क, किरत मतलब जो जिससे बंधी होती है ना गाय, वो खोल देती है कुछ बछड़ों की। तो कुछ बछड़े माँ के पास जाके दूध पीते हैं, और कुछ बछड़े जो है, कुछ जो गैया है उनका दूध भगवान कृष्ण अपने हाथों से निकालते हैं। कोई कारी काजर का, कोई धोरी घूमर का, ऐसे अलग अलग नाम है भगवान की गाय के। नीली, पीली, काली, धोरी, गोरी। हाँ, हंसी हंसी तो बच्ची है ना, उसका नाम है। इसलिए भगवान की गायों के अलग अलग नाम है। कभी तुम आओगे, तुम लोगों को मैं नंदगांव लेके चलूंगा। नंदगांव में एक जगह है टेरे कदम, वहां पे पीछे बहुत सारी गायें हैं, उनके सबके ऐसे ऐसे नाम है। फिर उसके बाद दूध दुहाए कहे मन मोहन, माखन दे मेरी माए, सदलो नीतो हवे सवेरो लाला, पियो दूध उधाए।
और भगवान जब दूध निकालते हैं तो भगवान को बड़ी जल्दी वाली भूख लगती है। कहते हैं अरे मैया कछु खावे को मिले वो। तो इस पर्टिकुलर हमारे जो डीटी वर्शिप है, इस पर्टिकुलर समय में जो है ये हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं इसको, 4 सवा 4 बजे करीब, कि भगवान उस समय आ रहे हैं, हमारी जो आरती का समय होता है। तो उसको वही कली का आरती बोलते हैं। तो ये भगवान को मोस्टली फ्रूट्स और जूस भोग लगता है। लेकिन जो रियल लीला, जो नित्य लीला है, उसमें भगवान को दूध निकालते निकालते भोग लगता है, भूख लगती है। तो वो कहती है सद लोनी तो आएगी सवेलो लाला, यानी कि सुबह सुबह मक्खन निकल गयो, और जो कछु मक्खन निकलो तू खा गए ऑलरेडी, अब कछु ना बचो। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, पियो दूध अधाय। अब वो भगवान कहते हैं चल दूध ही पी लेंगे यार, कोई बात नहीं। इतने में एक सखी सावरी तेरण पहुंची आए, तुम बिन देना दूध हमारी गैया रही रंभाए। तो इतने में एक सखी आती है, कहाँ पर, अटारी पर या महल पर, या टेरन पर, कि टेरन पहुंची आए। गोपी आती है, कहती है अरे लाला, तुम बिन देना दूध हमारी गैया रही रंभाए या अलमाए, कि तू आजा, तेरे बिना गैया हमारी दूध ना दे रही। तो ऐसा रोज होता है कि कुछ घरेलू गाय होती हैं, वो जब तक दूध नहीं देती जब तक कन्हैया की शक्ल ना देख ले, या कन्हैया के बांसुरी ना सुन ले। तो सखी सांवरी की मोहन ने जाए दुहाई गाय। अब सखी सांवरी के घर गए भगवान, और जाके क्या निकाला, दूध। आधो दूध दोहिन में ठाड़ो, आधो रहो चढ़ाए। अब आधा तो भगवान क्या करते हैं, फटाफट निकालते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, है ना। और आधा जो है वो खुद पी जाते हैं। और वो गोपियां सोचती हैं अरे कितना दूध निकलना था, निकला ही नहीं। सखी सावरी, नहीं हाँ, क्या था ऐसा, दूध, अच्छा, अरे हाँ, उसे है कि ऐसा है कि सखी सावरी कहने लगी, मधुर मधुर मुस्काए। मतलब वो देखती है आधा दूध तो पी गए कन्हैया। तो सखी सावरी कहने लगी, और मन ही मन मुस्काए। क्या बोलती है, सूर श्याम यशोदा के लाला, नित्य दुहावन जाए। ठीक है। तो कहते हैं कि भगवान ने एक्चुअली में इसको भोग लगा लिया, और जो दूध बचा है वो अब हमारे सेवन के लायक हो गया है। तो मेरी मन की इच्छा है कि काश हमारे कन्हैया जो है वो रोज हमारे घर में आए, रोज हमारे घर में आए, और हमारे घर में आके गो, क्या करें, गो गाय को धुआए, और गाय की जो है दूध निकाले। तो ब्रज में ये लीलाएं रोज होती है, क्योंकि ये नित्य लीला होती है ना। ये नैमितिक लीला तो है, लेकिन नित्य लीला भी है। तो नित्य लीला के अंदर ये इस तरीके के जो लीलाएं हैं। अब जब हमने गोधूलि का टाइम देख लिया, अब जब भी कभी आप शाम को देखोगे कि सूरज ढल रहा है, शाम हो रही है, तो आपके मन में हमेशा ये स्मरण होना चाहिए, अरे ये तो गोधूलि को टाइम है रहा है, जहाँ मेरे ठाकुर जी वापस आ रहे हैं। ठाकुर जी इनके साथ कितनी कितनी गैया भी आ रही हैं, और सारे के सारे हवा में धूल ही धूल उड़ रही है। और नीले नीले जो वर्ण के ठाकुर जी हैं, उनपे लटकते लटकते कर्ली जो उनके बाल है, उनके गालों में पड़ रहे हैं। कुछ जो है मिट्टी जो है उनके मुंह पे भी चढ़ी हुई है, कुछ उनके हाथों पे भी चढ़ी हुई है। और वो बीच में बांसुरी बजाते हुए खूब मौज में आ रहे हैं। तो अब गोपियां ये कह रही हैं कि दिन परीक्षये नील कुंतले वनरुहाननम बिभ्रदावृतम धनरजस्वलम दर्शयन् मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि। दीन परीक्षा मीन्स डे एंड शय, दीन मीन्स एंड,
दिन मतलब दिन की शुरुआत, परीक्षा मतलब खत्म होना, तो दिन परीक्षा मीन्स द एंड ऑफ द डे हैज कम। सूर्योदय को ही हम दिन का शुरुआत मानते हैं, और सूर्यास्त को हम लोग दिन का एंड मानते हैं। और उसके बाद जो शुरू होता है वो क्या होता है, रात्रि बेला। तो रात्रि बेला की शुरुआत को हम संध्या बोलते हैं, और रात्रि के अंत को हम निशांत बोलते हैं। तो it's evening, so the sun is moving towards the horizon but not has yet set. Sometime earlier, around 3 o'clock, all the cows feel satisfaction from grazing, and Krishna calls to them, "Dhiri dhiri, come to me. Niri niri, come to the water. Choo choo, drink water. Tiri tiri, come out the water and unto the bank. And here, here, let us go, let us go." So the cow have eaten and drunk their fill, and they are ready to return home. They remember their calves and call out, "Hamba, Hamba, Hamba." It's like, ah, ah, ah. So I'm coming, I'm coming. So Sri Krishna then play on his flute, gather his friends and all the cows and prepare to return home. भगवान कृष्ण की जो फ्लूट है ना, इट्स वेरी स्पेसिफिक। अगर वो बजा रहे हैं भगवान इस इंटेंशन से कि ही हैज टू कॉल द गोपीज, तो कोई भी उस साउंड को सुन नहीं पाएगा, केवल गोपियां सुनेंगी। और अगर भगवान अपने ग्वाल वालों को बुला रहे हैं तो ग्वाल वाले सुनेंगे, और भगवान अगर गैयाओं को बुला रहे हैं तो गैया ही सुनेगी, फिर और कोई नहीं सुनेगा। नील कुंतले, नील मीन्स डार्क ब्लू और ब्लैक, एंड कुंतले मीन्स बाय कर्ली हेयर। सो वनरुहा ननम बेव्रतावृतम, कि अन्नम मीन्स फेस, and avritam means covered, है ना। तो क्या कह रहे हैं, श्री कृष्णा's beautiful curly blue black hair reaches down to his shoulder and partly cover his face, which appears like a lotus flower covered by bees. The word bibrada, then he refers to Krishna exhibit the exquisite loveliness of his face, which is likened to the beautiful shining moon. Dhanaraja swalam. Raja means refers to the pollen like dust of the earth. So that Raja is Dhan, wealth. And here refers to Godhan. Okay, the wealth of the cows. So the cow are running, returning to their homes and to their cows. Krishna has called their names by playing sweetly on his flute. They all hurry to be with him, thinking Krishna is calling me. Then they run. The dust rising from their moving hooves sweeps upward towards the sky, sprinkling the leaves of the tree all around. This pollen-like dust also fall on Sri Krishna's, creating a very fine covering on his face, body, and garments. As Krishna returns with the cows, he takes them in his arms and embraces them. His inner motive in doing this is solely to show his beloved gopis his lotus face, which is beautiful, beautified by this dust, and convey to them that he desires to embrace them. And the real reason he plays his flute is not to gather the cow, but to call the gopis. Hearing the deep sound of his flute, the gopi stands on the road in the kunja and on the palace roofs only to see him return. Krishna's behavior may be likened to that of a person posing for a photograph. That person smiles or poses in a certain way just to ensure a good picture. Similarly, Krishna thinks that the gopis should come and see his lotus face. Therefore, not just once, but again and again, he laughs, embraces the cow, and talks to his friends with the motive of showing himself to the gopis. If he notices that the gopis are not looking at him, he thinks they must look at my face. The loving mood will then increase and bring them to me.
हर तुमको 2 मिनट लगेगा, ठीक है। स्मरण वीर यच्छसि. When the gopis address Krishna with the words, "O hero," Veera, this means hero in Madhur Ras. You are able to give us whatever we want. They tell him, you have the power to give smara. So you are our. So you have the power to give smara. So you are our hero. In this connection, smara refers to the Sanskrit word smar, you know, with the suffix ni, meaning to remind. So it relates to an experience of something that brings something else to mind. For example, the gopis see Krishna again and again, showing them his face that is beautified by the dust of the earth rising from the running cows, and that beauty arouses karma in their heart. Sometimes that is ordinarily considered a blemish serves to make Krishna or Srimati Radhika immeasurably more beautiful. If mud splashes into Krishna's face, or if the dust of the earth falls on it, his beauty increases million of times. The dust rising from the cows running throughout the land of Braja make him appear so beautiful that whenever the gopis remember him, they become filled with karma. In the past time of Krishna and the gopis, karma does not mean lust, it means prema. The gopis tell Krishna, we do not want to be attracted to you, we want to be aloof. But how can we be aloof when you show us your face again and again? कृष्णा का जो आइडिया है अपने फेस का, उन्हें पता है कि मेरा जो मेरा फेस है, मेरा फेस है वो इतना अट्रैक्टिव है कि जैसी गोपियां मेरे को देखेंगी ऑटोमेटिकली मेरे और अट्रैक्ट हो जाएंगी. मुखड़े को देख कोटि चंदा लगावे, गजरारी लट पे घटाए वारी जावे. थोड़ा बचपन है थोड़ा यौवन, सखीरी मेरो राधा रमन. हाँ. तो ये लाइन ना, मुखड़े को देख कोटि चंदा लगावे, गजरारी लट पे घटाए वारी जावे. ये बहुत ही सुंदर वर्ड्स है, बहुत लाइन है. So now let us go to Srila Vishwanath Thakur's Sarartha Darshini and Srila Jiva Goswami's Vaishnava Toshini. In their commentary to verse 11, both acharyas have discussed the quarrel between the gopis and their mind, with the gopis on one side and their heart and mind on the other. जैसे हम देख रहे हैं ना अभी तक, जब भी हम कभी भी कोई भी हमने श्लोक उठाया पिछले श्लोकों में, 11 श्लोकों में, सब श्लोकों के अंदर एक ही बात हो रही थी कि एक गोपी फेवर में बोल रही है, एक गोपी उसके अगेंस्ट बोल रही है ना. अलग अलग तथ्य दिए गए, जैसे कि तब कथा मृतम, अब एक कथा अमृत के समान है. नहीं पे बोला तब कथा मृतम, तुम्हारी कथा जो है वो मृत्यु के समान है. तो क्योंकि जैसी कथा सुनते हैं वी फील मोर सेपरेशन एंड वी फील लाइक डाइंग. तो वैसे ही यहाँ पे दोबारा से कॉन्ट्रडिक्शन आने वाला है, ठीक है. समझना, कुछ बहुत बहुत ध्यान से सुनना. As mentioned earlier, the gopis told their mind, why are you so restless, agitated, and obnoxious when Krishna goes to herd the cows? There is no reason for your restlessness. What is the use of being so disturbed? The mind replied, you are not at all rasik. You do not possess even a drop of rasa. O gopis, due to your ignorance, you are devoid of feeling. Krishna will go to the forest and I want him to go. But I do not want him to experience any kind of difficulty. He should play in the forest, but he should not suffer. Then why are you so obnoxious? I am obnoxious because he follows behind the cows. Those cows wander to places that are filled with sharp grass, shoots, edges of dry grains,
chips of stone and other things that will hurt him. To this, the gopis responded, "You are simply blinded by prema." ठीक है? This is not true at all. प्यार में अंधे हो तुम. Krishna has eyes. He will see where it is safe to walk and will only place his feet where the grass is silken and the sand is soft. फिर से दिमाग कहता है, वो गोपी, you think like this because you are neither intelligent nor rustic. ना तो तेरे अंदर कोई भगवान के प्रति प्रेम है, ना तो इंटेलिजेंट है. Cows have no wisdom or discrimination. They will not remain on smooth path. They will stray, and Krishna will follow them in order to bring them back to the path. The Gopi said, "Yes, we agree that Krishna will go to those places, but Brahma has created us to suffer, so we are suffering." The mind then told them, "It is all right for you to stay here and suffer, but I will not. I am going to leave your body along with your life heirs. I must leave. You should stay here and suffer alone." The gopis now tell Krishna, "By not being with us, you make us suffer. When you herd the cows, we feel separation from you and become afflicted with sorrow. But it is not only then that we feel this pain. We feel the same grief when we are with you. How is this so? In the evening, along with your cows and friends, wait, so how is this so? In the evening, along with the cows and friends, you return to the cowsheds in the village of Vrindavan. At that time, your face is finally welded by the foot dust of the cows and by your beautiful bluish black curly hair. Why do you let that dust cover your face? You should not allow this because then we cannot fully see it. Gopis want to see Krishna's face clearly, but at the same time they become utterly fascinated when it covered by a thin layer of dust and appears like the moon rising from the darkness. They say the moon is splendid with its diffusing rays, and your face has the same exquisite appearance. In fact, your face is more beautiful than it, partially hidden by the dust rising from the cow's hoofs and by your curly hair. Right. When they say that the foot dust of the cow is a wealth, they indicate its immense value as it utilized by Sri Krishna to increase the beauty of his lotus face. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has also shown this with reference to the Vishwa Praksha Sanskrit dictionary. Dhana refers to Godhana. Sri Krishna become gladdened by their words and thinks, "I am more fortunate. Taking these cows out of graze in the forest of Vrindavan has given me an opportunity to meet with you gopis. It is only by the medium of the cows that I can freely be with you." Krishna feels indebted to the cows and is happy when their foot dust settles on his face. This is his inner mood. He also has an inner reason for wearing a peacock feather. The peacock and pigeons beautiful dancing with each other induces him to dance as well. The peacock feather stimulates his love for the gopis, for it induces him to dance with them. And in fact, Rasa Leela has inspired by the dancing of the peacock. For this reason, Krishna has placed their feathers on his head, and for the reason also they are a wealth. So gopis are accustomed to watching Krishna as he returns from the posturing ground with the cows. He is armed and twinned with the heads of the cows in an embrace. They also observe him as he appears to search for his cowherd friends. To ordinary people, it seems that he is simply seeking the cowherd boys and cows. He does not want to have openly reveal his true motive
which is actually to look for the gopis. Moreover, among millions of gopis, he is looking for the one gopi in particular. Now, in their song of separation, the gopi says, when we see you searching in this way, we become restless and feel that we cannot live a moment longer without you. Seeing your embrace the cow and cowherd boy, we desire that you do the same with us. This is called smara. We suffer greatly in separation from you. The gopis continue from morning until the time we see you again. But then, when we do see you, we suffer even more than before because our desire to see you has increased. Shh. At that time, we may be compared to a thirsty person standing on the bank of river Ganga, thinking Ganga is here. I have also, I have come from very far away to drink its water. I have been through so many difficulties to get here. The water is beautiful and sweet, but there is no place of access, yani ghat, whereby I can reach the water. It's very difficult. We are thirsty, and flowing water is available in huge quantity, but we cannot drink it. Your face is exceedingly attractive because of dust that partially hides it. Huh? But the cow herd boy and cows are present when you return from herding the cows, and so are our father and mothers. The smara you give us at that time cannot satisfy us, it's only pain us. You consider whoever see my face will drown in an ocean of happiness, and this is especially true for us. Smara certainly appears in our heart. You know this, and that is why you know us, your face again and again. You want to increase our smara, but because you cannot give us what we want, that smara only increase our distress. According to Gopi, Sri Krishna calls them with the promise that he will give them what they want. Come and take it. He announces, but when they come, he deceives them, giving them only distress, calamities, and agony. They want to avoid seeing him, but he calls them and they cannot stay away. The melody of his flute pulls them forcibly to bring, and they are compelled to see him. But when they arrive, there is no meeting. They tell him, you madden us with the melody of your flute. You dragged us here to the secluded forest at night, and now we are weeping and wandering here and there, unable to see you. We have come to the conclusion that you are certainly a hero, for you are expert in giving suffering to others. You are indeed most beneficent in this. You show your prowess in killing millions of gopis, but you should understand that all the agony you causes will come upon your head, and you will be held responsible for this. You have taken away our dharma, the religious principle of fulfilling one's duty and responsibilities to one's family and dynasty, and you have taken away our shyness, patience, chastity, and other feminine virtues. Although you have taken everything from us, we still cannot do what you want us to do. Die. At the same time, you do not want us to die. Because if we die, you will not be able to find anyone else who can suffer as much as we have without dying. You see that we are suffering and that makes you happy. Oh Krishna, you're certainly a hero. So this is the point to note in Vaishnava Toshini. Although Dina Parikshaye generally means the end of the day, in this context,
the gopis mean to say that they have come to the end of their life. Cha. And they express their tragic mood. Thus, we have lost our tolerance and we are about to die. So please come to the end, come at once and meet with us. This point is very important. It is easy to understand an ordinary meaning of Dina Pariksha ye, but it difficult to grasp the inner meaning of the Gopis Pathos. As stated before, Nila Kuntaler means to by locks of curly blackish hair. Beauty actually lives in blackness. Okay, no matter how large one's eyes may be, they will not be beautiful if there is no black dot in the middle. सही बात है यार. अगर सफेद रंग की आंखें वाली लड़की दिख जाए तो सब भाग जाएंगे, राइट? So one's face may be beautiful, but it will not look as beautiful once hair is white instead of black. Huh? So what would happen if all the gopis black hair were cut off? You cannot imagine. Likewise, the gopis loveliness is exquisite. But if darkish Krishna were not with them, everything would be different. When Krishna's face is decorated with partially shrouded by his black hair, it becomes more beautiful. And then there is Swara. In one of his commentaries, Shri Vishwanath Chakravarti Thakur explained a specific point concerning the unique feature of the family lineage of the crowd community, the young Gopas and the young Gopis, the paternal Gopas and the maternal Gopis. The side of Krishna's beautiful face is meant for the Gopas and Gopas alone. So, do not do no one, but they can fully see and relish it. Neither Vasudev nor Devaki nor any of the Dwarka Vasi can see this resplendent sight. Moreover, Samara would not appear in the Gopi's heart in quite the same way if they were to see Krishna wearing his golden crown and opulent royal paraphernalia. The only desire of the Gopis and the Gopas is that may I always behold Krishna's lovely face. They do not want to see Dwarkadhish Krishna, Mathuradish Krishna, or any other form of Krishna. They only want to see him in his form as a cowherd boy. ठीक है, आज यहीं पे रोकते हैं, कल इसके बाद कंटिन्यू करेंगे.